Okay, okay. Okay, is my screen visible now? Yes, your screen is visible. Okay. So now I will start with the first thing, which is binomial distribution. So binomial distribution I have discussed in the previous class, in the offline class, but I will quickly discuss it again because uh, let's discuss all the distributions, binomial distributions, Poisson's distribution, normal distribution, and exponential distribution one by one. So now first I will start with binomial distribution. So for binomial distribution, if you see uh, in the LAQs of module 4, there are many questions from binomial distribution. But all those Sir, is questions, this the yes, it is the classifications of module wise questions? yes, that is what it is. Sir, could you share this? I can easily study them Okay, proper module wise. actually, I'm thinking whether to replace the previous set with this one because that will cause further confusion. Already there are two, three websites. So what would you suggest Okay, to? okay, okay, sir. Wha- I will then explain binomial Poisson normal distribution. All the questions are same. Right, Explain to application of Poisson distribution right, and right. sir, I have one question here. Okay, The LQ question asks explain to application of Poisson distribution. right. This is a 5 mark question, right? So if Yes, in the examination hall I can write the two applications of binomial distributions. Maybe binomial nominal distribution is used in predicting the win or loss probability of a match of a team yes. Toss you or the not predicting the hmm, not predicting the win or lose as such, but predicting, let's say, if there are 10 matches, what is the probability that a particular team will win the toss 8 times or 6 times or 3 times, like that. This is what we are going yeah. to predict using binomial distribution. Binomial distribution means I have read that coin toss losses Yes, and other examples. What will be, sir? Some we will discuss in today's class, step by step. okay, sir. Okay, sir. Okay, we will cover all these questions. So, but my question is, how would you like me to share these questions? Because I have already shared with you some practice questions. These are simply module wise. But should I replace the older website with this one? Sir, we have already received the link of the previous websites. If Right. you give this another website, we don't have any problem. Okay. Sir, here are more questions, I think. No, no, questions are same. We Oh, will. questions are then just module wise Yes, yes, ranked. yes. Just that I have segregated them module wise. That's it. You have separated them module wise. Yes, yes. No problem, sir. If you um, no not separate them, still that is okay. Now we Okay. have read um, all 5 modules, so it will be very easy for us to identify whatever the things Okay. are from which module. Or maybe I can instead of sharing this, maybe I can share the question numbers. So it will become easier for, like, for example, question number 11 here, it is LAQ. So question number 11 in this Yes, particular set is also the same question 11 in the set that you are having. So those are the yes, same. sir. So I'll share the question numbers so you can quickly identify the question from each module. Sir, I don't think anything more required because all the Okay. things we have to study. Right, right. Of course. That's actually true. But You can. some questions are actually more important as compared to, there are some questions which are more important actually. There are asked multiple times in the previous year. Uh, So yes, sir. those questions I will of course highlight during this session. Okay, let's start now. So I am going to Irfan has also joined. That's good to see. So now I will start. I hope my screen is visible. Sir, your screen is visible, but your voice is
low to comparatively. Okay, let me change my earphone. Then let's see if it is still visible. Yeah, hello, am I audible now? How is my voice coming now? Is it better? Totally audible. Okay, all. Okay, let me know whenever my voice breaks. Let me know. I'll do some changes. Then probably become better. Okay, so now let's start. I'll share my screen again, and we will discuss the first one, which is binomial distribution. Okay, so uh, there are four distributions that we are going to study as per our syllabus. So let me quickly show you those distributions. So those distributions are binomial distribution, Poisson's distribution, exponential distribution, and normal distribution. These are the four ones which are there in our syllabus. There are many more distributions outside our syllabus that if you want you can study further. Alright, let's start binomial distribution. So in the previous class, uh, in the previous offline class, we discussed that there are two types of probability distributions. One is discrete, another is continuous. So I hope all of you have at least some idea what is discrete and what is continuous. We have discussed that in module 1. So Yes, sir. Discrete means number of two brothers, means exact number. yes, मतलब एक student, दो student, three students, that is countable number. That is discrete. Countable number. And continuous means the distance, height, temperature, these types of decimal Right, numbers. which can be in decimal also. For example, weight हो सकता है 2.55 भी हो सकता kg भी हो सकता है, पर number of people can be only 1, 2, 3, 4, 5. So that is the difference between discrete and continuous. So Yes, sir. now we are going to discuss binomial distribution. So before we discuss binomial distribution, you should know that binomial distribution is a discrete distribution. Okay, it's not continuous. Okay, it is discrete distribution. Why it is discrete? We will discuss that. Okay, so this means it deals with countable outcomes like 0, 1, 2, 3, 4, 5. It does not deal with fractions. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंडिया और बांग्लादेश के 10 मैचेस हो रहे हैं, तो इंडिया उन 10 मैचेस में से 3 टॉस विन कर सकता है, 4 टॉस विन कर सकता है, 10 टॉस भी विन कर सकता है, 8 टॉस भी विन कर सकता है, पर 8.5 टॉस विन नहीं कर सकता. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट. So it deals with countable outcomes like 0, 1, 2, 3, but not fractions. And when it is used, so we have discussed this in the offline class also, but let me repeat it again. Binomial distribution is used when you repeat the same experiment several times and it only has two outcomes. For example, when you are going for toss, there are only two outcomes: win or lose, head or tail. Okay, and we will discuss some of the applications. So now let's discuss Sir, this. yes, no questions. क्या कह रहे हैं? Please repeat.
I am saying yes no questions are also the example of binomial distribution. नहीं, यस और नो क्वेश्चन एग्जाम्पल नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन। मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम, आप एक MCQ टाइप एग्जाम में अपियर हो रहे हैं जिसमें 100 क्वेश्चन है। उन 100 क्वेश्चंस में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप उस क्वेश्चन को करेक्टली आंसर करेंगे या फिर आप उसको रॉन्गली आंसर करेंगे। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करके आप ये पता लगा सकते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप किसी पर्टिकुलर नंबर के क्वेश्चंस को राइट आंसर करेंगे। फॉर एग्जांपल, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप 100 में से 90 क्वेश्चंस को राइट आंसर करेंगे। इसको मॉडल करने के लिए आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हैं। ओके, आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को राइट और रॉन्ग करेंगे, इसके लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। आप 100 क्वेश्चन में से किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन को राइट करेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं। आई होप आई वाज एबल टू मेक इट क्लियर। Sir. Okay. So now it has only two outcomes: either win, lose, right, wrong, defective item or good item, like that. Then has the same chance of success each time. What this point means is that आप पहली बार टॉस कर रहे हैं, दूसरी बार टॉस कर रहे हैं, 100 टाइम टॉस कर रहे हैं, एवरी टाइम टॉस करने पर आपके हेड आने का प्रोबेबिलिटी और टेल आने का प्रोबेबिलिटी वही रहेगा जो पहली बार रहेगा। फॉर एग्जांपल, पहली बार टॉस करने में 50% चांस है कि हेड आ सकता है और 50% चांस है टेल आ सकता है, और 60th टाइम भी आप टॉस करेंगे तो भी 50% चांस है कि हेड आ सकता है और 50% चांस है कि टेल आ सकता है। तो जो चांस ऑफ सक्सेस है, सक्सेस आप यहाँ पर हेड को मान सकते हैं, मान लीजिए, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम रहेगा ऑन ईच टॉस। दैट इज व्हाट इट मीन्स। ओके, थर्ड वन इज इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर्स। सो मान लीजिए अभी तक आप 10 टॉस हार चुके हैं, तो 11 टॉस में क्या होगा ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि 10 टॉस तक आप कितनी बार टॉस विन किया है। सो एवरी ट्रायल इज इंडिपेंडेंट। आप 101 टाइम टॉस करेंगे तो वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि पहले क्या हो चुका है। 100 बार, अभी तक 100 बार टॉस किया जा चुका है, उसमें क्या हुआ है, इससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर। एंड इट इज रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम। तो यहाँ पर इनफाइनाइट टाइम्स नहीं किया जा रहा है, कोई फिक्स टाइम किया जा रहा है। 100 टाइम्स किया जा रहा है, 1000 टाइम्स किया जा रहा है, 10 टाइम्स किया जा रहा है, पर वो नंबर इनफाइनाइट नहीं है। सो एनी डाउट्स सो फार in binomial distribution? No, sir. Okay, Up to that, no doubts are there. all. Okay, now let's discuss some of the examples. So, like we discussed, head and tail. Let's say head is success, tail is failure. Then, apart from that, okay. So here now comes some slightly mathematical part. So if you're finding it difficult, you can skip it. But if you write it, you will get very good marks. So let me try to explain what is this. So in module 1 we have discussed mean and variance. So for each probability distribution which we are going to discuss, binomial distribution, Poisson's distribution, normal distribution and exponential distribution, there are certain particular values for mean and variance. So if you are able to remember them, then it's even better. If you find it difficult, then you can skip it. So let me explain what is this. So mean value of binomial distribution is n is number of trial. मान लीजिए आपने 10 टाइम्स कॉइन को टॉस किया तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मान लीजिए आप हेड को सक्सेस मान के चल रहे हैं, तो और हेड का प्रोबेबिलिटी है 50%, तो आप p की जगह 1/2 लिख सकते हैं। सिमिलरली वेरिएंस इज n इंटू पी इंटू 1 माइनस पी। p है सक्सेस का प्रोबेबिलिटी और 1 माइनस पी है फेलियर का प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर ओनली 2 आउटकम्स हैं। तो अगर हेड का प्रोबेबिलिटी है 1/2, तो टेल का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1 माइनस 1/2 विच इज 1/2। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ मीन एंड वेरिएंस। Okay, now we will discuss some real world applications. For example, quality control. मान लीजिए आप किसी फैक्ट्री में जाते हैं, वहाँ पर 1000 आइटम्स हैं, वो 1000 आइटम्स का क्वालिटी कंट्रोल किया जा रहा है। क्वालिटी कंट्रोल में ये देखा जाएगा कि कौन सा आइटम डिफेक्टिव है या डिफेक्टिव नहीं है।
यहाँ पे भी दो आउटकम है, आइदर इट विल पास बिकॉज इट इज नॉट डिफेक्टिव और इट विल फेल बिकॉज इट इज डिफेक्टिव. Then survey questions. Survey questions are again yes or no, like your multiple choice questions. Then we have medical trials. So in medical trials, for example, आपने किसी डिजीज के लिए एक नया ड्रग इन्वेंट किया है, तो वो ड्रग ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा. देर आर टू पॉसिबिलिटीज, सक्सेस हो भी सकता है, फेलियर भी हो सकता है. सो these are three outcomes. Okay, now let's talk about its figure. So this is the graph of binomial distribution. So I will share this document also, so you can, if you want, you can read answers from here also. So you can see here, this is a discrete. Why it is discrete? Because on 0 you have some value, on 1 you have some value, from 0 to 1 you have no values, because this is discrete. There can either be 0 heads, 1 heads, 2 heads, 3 heads, or 4 heads if you toss the coin 4 times. So this is a graph. If you are able to make this graph, it's good, but even if you are not able to make this graph, then it's okay as far as you write the answer. अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिया है और आपने एग्जांपल्स लिख दिए हैं कि कहाँ पर इसका यूज हो सकता है, तो आपको ऑलमोस्ट फुल मार्क्स मिल जाएंगे. Okay. Now this is another question. Write on the application of binomial distribution. So applications are simply factory. In factory, you check whether product is good or bad. You make 100 light bulbs. How many of them are bad? How many of them are defective? Similarly, in medicine testing, whether you make a new medicine, out of 50 people, how many people get cured? Then you have surveys, you have flipping coins, and so on. So these are the key thing is that there are two alternatives, success and failure, and we are going to model that success and failure to find out how many times are we going to be successful. The probability of that we are going to identify using binomial distribution. So any questions so far in binomial distribution? I hope it's clear. So, am I audible? No, sir. Up to that point, I have no question. All. Okay, nice. Okay, now let's discuss the next distribution. So we have discussed binomial distribution. Now we will discuss Poisson's distribution. So it is a French language word. I think it is pronounced not as Poisson's, but there is a French pronunciation which you can find out on the internet. And is, I think, silent. Okay. So now we will discuss Poisson's distribution. So binomial distribution का यूज होता है जहाँ पर सक्सेस और फेलियर हो, लेकिन Poisson's distribution का यूज होता है queuing theory. So let me try to explain what is queuing theory. So Sir, rare events. of course rare events, it is used in rare events, but a very common use of Poisson's distribution, let me try to explain using queuing theory, because queuing theory is a very relatable thing. So let me write queuing here. I hope you understand this word, all of you, right? Yes, sir. So can you give a real world example? कहाँ पर queuing यूज होता है? क्यू कहाँ पर होता है? आप कहाँ पर देखते हैं क्यू डे टू डे लाइफ में? Anyone? This is a queue, okay? People standing in a line, that is queue. Sir, in banks, ATMs. Right, you see banks, ATMs, you go to a doctor, various places, okay? So the reason why I am discussing queuing theory is because queuing theory is modeled using Poisson's distribution. So of course we will discuss that, but let me first discuss the definition. So Poisson's distribution is used to count how often an event happens in a certain time or space when the event happened randomly and not too often. So for example, मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, आपका एक क्लिनिक है
तो डॉक्टर के क्लिनिक में कितने लोग नेक्स्ट 1 आवर में आएंगे, इस चीज़ का प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, पिछले लास्ट 7 डेज के डेटा के आधार पर आपने ये देखा है कि रफली 1 घंटे में 5 पेशेंट आते हैं, और आप ये पता करना चाहते हैं कि नेक्स्ट आवर में 7 पेशेंट्स आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से। Okay, so how many times will something happen in a fixed time? For example, next hour में कितने patients आ सकते हैं? That is modeled using Poisson distribution. So some other examples are, in a call center, how many phone calls are going to come in next hour? In another example, buses arriving, how many buses, मान लीजिए आप एक जगह आप चापाडाली मोड़ पे आप खड़े हैं और वहाँ पर अगले 1 घंटे में कितने बस पास होंगे, इसको आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से मॉडल कर सकते हैं। कितने बस पास होंगे ये एग्जैक्टली ठीक नहीं है। प्रोबेबिलिटी क्या है कि 10 बसेस पास होंगे, प्रोबेबिलिटी क्या है कि 15 बस पास होंगे, प्रोबेबिलिटी क्या है कि 100 बस पास होंगे। दिस क्वेश्चन कैन एक्चुअली बी आंसर्ड यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। Similarly, how many car accidents happen in a day in a city? That is also Poisson distribution. So, one important characteristic of Poisson distribution is that these events happen randomly. For example, accident होना किसी के कंट्रोल में नहीं होता है, वो randomly होता है, and it is not too often. वो बहुत ज़्यादा frequently नहीं होता, कभी कभी होता है। So that is modeled using Poisson distribution. So again, for Poisson distribution also you have many LAQs. So let me do a quick search. So you can see here there are 4 or 5 questions for Poisson distribution. Okay. So now let's discuss condition for Poisson distribution. Events happen at random. Random means, for example, accident होना किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो randomly होता है। या पेशेंट्स कितने आएंगे किसी डॉक्टर के पास, ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता, वो randomly होता है। Similarly, of course, you are counting how many events happen in a fixed time, area or space. And 2 events don't happen at the same time means 2 पेशेंट्स एक साथ नहीं आते हैं, एक पेशेंट पहले आते हैं उसके बाद दूसरे पेशेंट आएंगे, या एक एक्सीडेंट पहले होगा उसके बाद दूसरा एक्सीडेंट होगा। एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज रेट लाइक 3 calls per hour. So अगर आपसे ये पूछा जाए कि बारासात में ऑन एन एवरेज कितने एक्सीडेंट होते हैं एक दिन में, तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे? एनीवन? आपसे पूछा जाए कि बारासात में एक दिन में कितने व्हीकल एक्सीडेंट होते हैं, तो इस चीज़ को आप कैसे फाइंड करेंगे? ये डेटा आपको कहाँ से मिलेगा? Sir, your voice pitch is too low. Okay, is it better now? Yes. Is my voice audible now? Is there any improvement? I'm not sure whether I'm audible or not. Can someone please confirm if you are able to listen to my voice? Still, it is too much low. Okay, it is still good. Okay, hold on. Just let me go to another room where I can speak more loudly. So then I'll start from there.
फाइनल सेम पढ़ाते हैं किस में मैडम? बीबीए या बीबीएडीएम का फाइनल सेम? नहीं मैडम, फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं, सेकंड ईयर में पढ़ाते हैं। Yeah, hello students. Am I audible now? Better audible? Is my voice more clear? Yes, sir. Yes, sir, you are audible. All right, all right. So now I'll share my screen. Yes, sir, you are totally audible now. All right, all right. Okay, so poison distribution, there is an average rate. So अगर आपसे कोई पूछे कि चापाडाली मोड़ पर एक दिन में कितने लोगों का एक्सीडेंट होता है, व्हीकल का एक्सीडेंट होता है, तो आप ये पास्ट डेटा के आधार पर बता सकते हैं। आप ये पता लगा सकते हैं कि पिछले एक वीक में 7 दिन में, पिछले 7 दिनों में कितने एक्सीडेंट हुए थे। आप उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको एक दिन का एवरेज एक्सीडेंट मिल जाएगा कि इतने एक्सीडेंट एक दिन में होते हैं। पिछले 7 दिन के टोटल एक्सीडेंट को आप 7 से डिवाइड करिए, आपको वो मिल जाएगा। तो वो है एवरेज रेट। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि अगले दिन 5 एक्सीडेंट या 10 एक्सीडेंट या 15 एक्सीडेंट होने के क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इस बात को कोई भी पर्सन 100% कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकता। ये तो एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस आइडिया that using the past data you can find the average rate, but how many accidents are going to happen, how many people are going to come to doctor's clinic, all those questions are probability questions. So this average rate is represented by lambda. This is a Greek letter. I hope this is visible. This is a Greek letter lambda. So lambda represents average number of events. कितने पेशेंट्स आने वाले हैं, कितने एक्सीडेंट होंगे, कितने कॉल्स आएंगे कॉल सेंटर में, that is represented using lambda. And in this particular distribution, variance is also lambda. So mean is also lambda, variance is also lambda, which is same as mean. You can skip this part if you find it difficult, mathematical part. Okay, I hope till this point it is clear. Any questions till this point in Poisson's distribution? Yes, sir, Poisson distribution part is clear almost. All right. So Poisson distribution is simply used to model rare events, and we try to find out how many number of such events are going to take place in a definite time period. जैसे 1 घंटे में कितने पेशेंट आएंगे, एक दिन में कितने एक्सीडेंट हो सकते हैं, and so on. Okay. So now I am going to explain this graph. Okay. If lambda is 1 means that based on the historical data, आप past data के आधार पे आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए 12/7 के चापाडाली मोड़ पर एक दिन में एक व्हीकल एक्सीडेंट होता है। अगर लैम्डा 1 है तो उसका मीनिंग ये है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि 15 या 20 एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो बहुत कम है। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस यूजिंग सम ड्राइंग। सो इफ यू सी हियर, इफ लैम्डा अगर मान लीजिए ऑन एन एवरेज किसी डॉक्टर के यहाँ एक पेशेंट आते हैं एक दिन में, तो 5 पेशेंट या 10 पेशेंट्स या 15 पेशेंट्स आने के लिए प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो ये प्रोबेबिलिटी कम है, ये इस तरह से दिखा, ये प्रोबेबिलिटी यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम हो गया है, यहाँ कम हो गया है, एंड सो ऑन। जितना आप आगे जाएंगे प्रोबेबिलिटी कम होता जा रहा है। आई होप आप में से किसी को समझ में आई ये बात, ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि अगर एवरेज रेट कम है, तो अगर मान लीजिए एक दिन में एक पेशेंट आते हैं, तो 5 पेशेंट या 10 पेशेंट्स या 15 पेशेंट्स आने की प्रोबेबिलिटी कम होगा। सो आप में से किसी को समझ में आई ये बात?
Anyone? Sir, it is a Poisson distribution graph. Yes, it is Poisson distribution graph. This graph, so this particular graph is when lambda is equal to 1, and this graph is when lambda is equal to 4. When lambda is equal to 4 means, based on the past data, every day four accidents are happening. Because every day four accidents are happening, it will be 4 somewhere here. So the probability of 4 accidents happening, if lambda is equal to 4, is more than probability of 4 accidents happening when lambda is equal to 1. So are you able to understand this particular point? Okay, if it is complicated, we can skip it. Nobody is going to ask you this point. But what I was trying to explain is कि अगर एवरेज ज़्यादा है, पिछले पास्ट डेटा के आधार पे एवरेज ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ज़्यादा अकरेंस होने का प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है. अगर आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि 100 पेशेंट्स आ रहे हैं, तो 100 पेशेंट्स आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अगर आप पिछले 10 डेज में देख रहे हैं 50 पेशेंट्स आते हैं, तब 100 पेशेंट्स आने का प्रोबेबिलिटी कम है. दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन. ओके, so but see, if a question comes on Poisson distribution, you should write what is Poisson distribution, you should write the characteristics, and you should write the examples. अगर आप मैथ्स लिख पाते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं, अगर आप ग्राफ बना सकते हैं तो ग्राफ भी लिख सकते हैं, अगर नहीं बना सकते दैट इज ऑल्सो ओके. नाउ आई एम गोइंग टू Sir, यस. could you show the question list of the module 4 chapter? Just you have previous. Yes, these are the questions of Poisson distribution. These are the all questions we have to study. This is from module 4. Yes, LAQ from module 4. All LQs questions. Yes. Sir, why have you marked these questions yellow color? No, I just quickly searched Poisson's here, so it started appearing in yellow. I searched Poisson here, so this is Okay. Edge browser. It has started showing Poisson's in yellow color. All questions are equally important. No. All questions are not equally important. That is why I am taking this class. Poisson's binomial are very important. Maybe other questions are not that much important. They may or may not come. But Poisson's Poisson's binomial distribution questions are very much important. Yes, they are very important. You should And focus. normal and exponential, sir? They are less important than these questions actually. But Okay, we will okay. study normal distribution because normal distribution will be used in module 5 to answer some questions Okay, in sir. module 5. I understand. You can carry on. All right. So, okay. Now we will discuss the next type of distribution. So, in Poisson distribution is used in call center. How many phone calls are going in? How many phone calls are going to come? Traffic flow. How many cars are going to pass per minute? So you can see here. Every time we are using some example of Poisson distribution is where we are trying to find out how many occurrences are happening per unit of time, per hour, per minute, per day, all those things, and how many times something is going to happen. For example, how many cars will pass, how many people will enter a shopping mall in one day, how many typing errors how many typos are we going to make when we are typing, how many machines are going to break down in a day, in a year, and so on. How many earthquakes are going to come in a month, how many patients are going to come to emergency room, and so on. So these are some examples. And mean is lambda, variance is also lambda. Again, this is another question. This is also can be answered using what you have studied so far. Okay, now we are going to take this next question, distinguish between binomial and Poisson's distribution in 200 words. So I hope by this time all of you understand binomial distribution and Poisson's distribution. Yes. Whatever you have understood, you can simply write that in if this kind of question comes, or you can also make a table. But we will discuss both the approaches. So in binomial and Poisson distribution, sorry, this is actually only for Poisson's. Okay, so binomial distribution is used when you have fixed number of trials, like flipping coin 10 times. Each trial has two possible outcomes, success or failure. While Poisson's distribution is used to count the number of times an event happens in a fixed interval of time or space. For example, number of patients coming in a doctor's clinic in 1 hour. So this is the main key difference. Now we will discuss some more differences.
So binomial distribution talks about fixed number of trials, and Poisson's distribution counts number of events over a time. That same thing that we have discussed. That आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये पता करते हैं कि 10 टाइम्स कॉइन टॉस किया तो कितनी बार विन, तो 5 बार विन या 6 बार विन होने का प्रोबेबिलिटी क्या है. और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आप ये फाइंड करते हैं कि किसी एक घंटे में कितने पेशेंट्स, नंबर ऑफ लेट्स से 10 पेशेंट्स आने का प्रोबेबिलिटी क्या है. Now, after that, you can write the mean of binomial distribution is n into p, and Poisson distribution mean is lambda. So these are the key differences. Mean is n into p, and here mean is lambda. And here we are talking about average rate. Here we are talking about probability of success. And one more thing, both the distributions are discrete. Why they are discrete? Because kitne Well, yes, it is mainly the difference. it is, but here we have mentioned similarities also, because we are actually comparing them. Of course, we need to write differences, but you can also mention similarities, because we are trying to compare these two. That's why. So both of these are discrete. Why they are discrete? Because number of patients arriving per unit of time can only be whole numbers. 100 पेशेंट आ सकते हैं, 101 पेशेंट आ सकते हैं, लेकिन 100.55 पेशेंट्स नहीं आ सकते. दैट इज वाई we are these two are both of these two are discrete type. I hope till this point it is clear. Any questions so far in Poisson's distribution and binomial distribution? I hope everything is clear. Now we will discuss normal distribution. Let me share this particular file also, so you can read in your free time. So I have shared it here. Sir, Yes. what is this? Which link? Sorry. Sir, which link is this? This is the link of this document which I have been using to teach you today. Oh, okay, sir. This document. Sir, by the way, I want to ask you one question. Yes. I have thoroughly studied your LQ questions, and I have found two questions which are extremely important. I want to discuss that. Okay. Yes. The Please. differences between correlation and regression, and Okay. differences between correlation and covariance. I have noticed that these two questions are extremely important. Okay. Okay. All right. So let me open that question. Is it LAQ or SAQ? Sir, LQ, LQ. LAQ. Sir, number 24. The difference between correlation and covariance. Okay, I will share with you some notes on this topic. These are they are very much related concepts, correlation and covariance. Just that, see, in correlation में आपको पता है range क्या होता है correlation coefficient का? Can you tell what is the range? Okay, sir. Can you tell what is the range of correlation coefficient? What is the range of correlation coefficient? Yes, Sir, one second. -1 to +1. Yes. So in correlation it is -1 to +1. In covariance it can be minus infinite to plus infinite. No, covariance, the number can be any. -2, Yes. -3, It +3. can There is be, no range. It can be minus infinite to plus infinite. So that is, Infinite numbers. yes. That is the key difference. Just that. But of course, I'll share with you the answer to this question. So No, sir. Answer we can found in any sources. okay. I am just asking. These are too much common and important questions. No. This is actually covariance question is not that much important based on my experience. But of course, Okay, the sir. person who is making paper will know the real thing. But I think this is not important. In correlation, what is important is Spearman rank correlation coefficient. That is very important. Hmm. The questions relating to rank correlation coefficient. Okay. These are Sir, important. I have one question more. Yes. Sir,
in semester exams there are six LAQ. There will be six LAQ questions. My question is, will there be the sum part on three questions will be there? That means three mathematical questions will be there in LAQ part. I'm not sure because the person who has made the paper will be knowing this. So, but Okay. based on what I have heard is that theory questions are going to be more in numbers. Okay. But there could be, like, for example, Spearman rank correlation coefficient is an important question. Apart from that, finding Carl Pearson correlation coefficient is also important. So Or finding regression uh, regression is also on important. On y on on x or x on y. y on x is also important. Yes. Okay, sir. All right, Clear. please. हाँ, आपको बोले ना? You can carry on. Yes, yes. So uh, that is what I was saying that प्रैक्टिस आपको कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए. आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर सकेंगे. Sir, this module wise link, could you share? Will be very helpful. Actually, I can share what I'm thinking how to avoid confusion because there will be then multiple. No. Like for example, yesterday your CR was trying to access that old Excel file, that Google Sheet file. So, sir, I can message you personally. You can share with me personally, so no one will suffer any confusion. All right, okay, I can do that. I can simply message you hi, then you can share me. Right, right. What I will do is I will share the PDFs of Okay, SAQ, okay, sir. Okay, sir. SAQ and LAQ. Okay. Okay, sir. Definitely. I have only divided SAQ and LAQ. I am not able to divide MCQs for the time being. So, but I have divided SAQs and LAQs that I can share. Okay, sir. In fact, I will share the PDFs in your group itself. It will Okay, sir. sharing the PDFs will not cause any confusion. But sharing a new link will probably cause more confusion. That is what I'm saying. Okay. Any other questions? So, shall we move to the next topic? Normal distribution. So, if you can, somebody can respond if I'm audible right now. Seems connection is not there. Shomik, am I audible? यस सर. सर पीपीटी कब लेंगे? PPT अभी इस क्लास के बाद. ओके सर. अभी ऑनलाइन. Okay. All right. So now let's discuss the next thing, which is normal distribution. So normal distribution is a bell-shaped curve. So I hope you understand what is a bell. So this is a bell, right? I hope you understand. This is a bell, and normal distribution will have shape which is similar to bell. So normal distribution is similar to a bell, this bell-shaped curve. This is a bell-shaped curve, and normal distribution is way to describe data that is spread out in very common pattern. For example, height of people, test score, weights of apples, and so on. So I'll explain what it actually means. But before that, let us talk about some characteristics. So most values are near the average. Few values are very small or very large. The curve is symmetrical. I hope you understand what is symmetrical. Symmetrical means इस लाइन के दोनों तरफ ये कर्व सिमिलर है, सिमेट्रिक है. ये पोर्शन और ये पोर्शन सिमेट्रिक है. And for example, height of people is on an average, let's say in Brainwell University, if we talk about the height of male or boys, in that case, let's say most of the people are 175 centimeter of the height. So एवरेज हाइट के लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, ये सबसे ज़्यादा है. और बहुत ज़्यादा टॉल लोग जैसे 6 फीट हाइट, 6 फीट या 7 फीट हाइट वाले लोग कम होंगे.
जितना आप हाइट बढ़ाते जाएंगे उतने उनके होने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, और बहुत कम हाइट वाले लोग भी कम होंगे, लाइक 4 feet पीपल और 4.5 feet men will be less. So this is what is modeled using normal distribution. So any questions on this normal distribution? I hope I was able to explain normal distribution. So normal distribution, again height and weight. मोस्ट पीपल का हाइट या वेट एवरेज होता है। बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा वेट हो या बहुत कम वेट हो, या बहुत ज़्यादा हाइट हो बहुत कम हाइट हो। सिमिलरली मोस्ट पीपल का इंटेलिजेंस एवरेज होता है। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग भी बहुत कम होते हैं और बहुत कम इंटेलिजेंट लोग भी बहुत कम होते हैं। मोस्ट पीपल आर एवरेज, एवरेज IQ पीपल। सिमिलरली स्टॉक मार्केट रिटर्न, ऐसा बहुत कम होता है कि बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए, ऐसा बहुत कम होता है कि बहुत somebody has joined. Okay, one more person has joined. All right. So, who is Dodo Biswas? Can you identify yourself, please? Yes, sir. Somebody has joined with name Dodo Biswas. It is my who has chosen my guy. Okay, might be some. Okay, all right. So दैट इज व्हाट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली एक दिन में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए स्टॉक मार्केट में या बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, दोनों का प्रोबेबिलिटी कम होता है। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी भी कम होता है, बहुत ज़्यादा लॉस का प्रोबेबिलिटी भी कम होता है। यूजुअली आपको एवरेज रिटर्न्स मिलते हैं, एवरेज रिटर्न्स होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ऐसे बहुत ज़्यादा दिन होंगे जिनमें आपको एवरेज रिटर्न्स मिलेंगे। सो दैट इज व्हाट इज मॉडल्ड यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज एक्चुअली रॉन्ग। Okay, now I think time is almost up. Okay, let's try to discuss exponential distribution also. So let us go back to queuing theory. So in queuing theory, Poisson's distribution is used to model how many number of events are going to happen in per unit of time. For example, कितने लोग डॉक्टर के पास आने वाले हैं 1 घंटे में, कितने एक्सीडेंट होने वाले हैं 1 दिन में। इसको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके मॉडल किया जाता है। लेकिन किसी 2 पेशेंट्स के आने के बीच में जो टाइम इंटरवल है या किसी 2 एक्सीडेंट होने के बीच में जो टाइम इंटरवल है, उसको एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से मॉडल किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस। अगर किसी क्यू में कितने लोग आने वाले हैं ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से पता लगाएंगे। हाँ बताइए साइन करना था। अभी आप इसके बाद आ सकते हैं 15 मिनट बाद। उसके बाद यस। So I was explaining exponential distribution shows that time between events in a process where things happen randomly and independently but at constant average rate. So I hope I was able to explain the difference. कितने लोग आएंगे ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से मॉडल किया जाएगा। उन लोगों के आने के बीच में कितना टाइम डिफरेंस है उसको एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से मॉडल किया जाएगा। So any questions on this? And this is your exponential distribution graph. If you see here, what it is showing is that the time period difference between two occurrences, when it is less, the probability is high. What it means is कि किसी 2 पेशेंट के आने के बीच में 1 मिनट का डिफरेंस होगा, उसका प्रोबेबिलिटी ये है। उनके बीच में 0 मिनट का डिफरेंस होगा, उसका प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा है। और उन दोनों पेशेंट्स के आने के बीच में 5 मिनट्स का डिफरेंस होगा, उसका प्रोबेबिलिटी कम है। सो what it tries to show you is that probability of things happening very quickly is more as compared to probability of things happening less frequently. So
अच्छा तो आप आधे घंटे बाद फिर वीडियो से आना। सर मेरा मेरा पीपीटी देना हो गया, हाँ सिग्नेचर बाकी है। आधे घंटे बाद वीडियो देना वहाँ Okay, any questions on exponential distribution? No, sir. All right. So some of the uses of exponential distribution is waiting time. Waiting time means कि दो लोगों के बीच में कितना वेट करना पड़ेगा किसी एक नेक्स्ट पेशेंट को आने के लिए. And Could you repeat? apart from that it is memoryless. Memoryless means कि अभी तक जो हुआ है उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. मान लीजिए अभी तक एक पेशेंट और दूसरे पेशेंट के आने के बीच में एवरेज टाइम था 2 मिनट्स, तो अब फ्यूचर में क्या होने वाला है ये इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा. दैट इज मेमोरीलेस प्रॉपर्टी. एंड इट स्टार्ट्स हाई एंड डिक्रीजेस. व्हाट इट मीन्स इज यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर आते धीरे धीरे कम हो रहा है. दैट इज व्हाट इट मीन्स. एंड इट ओनली हैज़ पॉजिटिव वैल्यू. वाई पॉजिटिव वैल्यू? बिकॉज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव. सो ऐसा नहीं हो सकता कि दो पेशेंट के बीच में आने का टाइम -1 मिनट हो जाए. ऐसा हो नहीं सकता है. या तो वो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा. Okay. Now some uses: waiting time between events, reliability and life, queuing systems, and also radioactive decay. Radioactive decay is like okay, let's not discuss this. But radioactive, as you know, like uranium is radioactive. Atomic energy is used. Atom bomb is used making radioactive elements like uranium and plutonium. So I hope. This was a good session. I hope all of you now know what is Poisson distribution, what is binomial distribution, what is exponential distribution, what is normal distribution. We will again join in the next online class. So let's stop for now. If you have any doubts, you can send me message. And Yes, sir. No, at feel free that to point send I me. have no doubts. All right, that's good. So please join in tomorrow's class also at this time. Now, those who want to give PPT, they can start now. So anybody who wants to give PPT? Sir, Yes. if we get attendance for this class, Yes, of course. For this class, all of you will, I mean, those who have joined, you will get. So let me note down your roll numbers. I think. What is your roll 74 and 26. 74 and Irfan also joined for some time, Irfan has also joined, but left but he left. 68. Okay. These three. Okay. All right. You will get that attendance. All right. Thanks for joining, students. If you want to present your PPT, you can stay, or then otherwise you can leave. Somik, do you want to? Okay, sir. I will start it. All right. Please share your screen. Let me stop sharing my screen. हाँ, सौमिक स्क्रीन शेयर करिए. बैठेंगे? हाँ सर, कोई बात नहीं. आपकी क्लास सर? क्लास चल रही है. हाँ, इतना बात करें. ठीक है. बढ़िए, सही है, बढ़िए.